हे एवरीवन। तो हम अभी ग्राफ सीखने वाले हैं। आई नो यू माइट थिंक कि ग्राफ क्यों चाहिए यार, or you might even hate data structure to some extent like I do, but I also want to show you the actual use case of it, right? So one very interesting use case जहाँ मैं अभी काम करता हूँ, not exactly related to it but in somewhat, in trading sense, this is a very interesting way to earn money. So this is kind of risk free if you really look at it. So this is called arbitrage exchange, right? Or basically arb trading. So graph in a whole, as a whole, it's तुम्हारे पैकेज मैनेजमेंट में काम आ जाएंगे, डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन में काम आते हैं, राइट? So now arbitrage trading in foreign exchange money, right? Foreign exchange, it's a very useful thing. How? That's a good question to ask yourself, right? Now let's do something, right? Let's take US dollars. Okay, this is your currency, all right? फिर लेते हैं INR, Indian rupees. This is again your currency, right? And let's take Japanese yen, all right? That again is a currency. Now I'll just explain the logic. बाद में I'll introduce you to the graph terms. So just hang on. Let me also take the screenshot right now so that I can show you what exactly is going on. Right. Oops. So just to show you, that's 1 INR is 1.86 Japanese yen, and then there's United States dollar, that's 153 Japanese yen, right? Oops. Let's see, Indian rupees. There you go. So if you really look at it, 1 United States dollar equals to 153, 1 United States dollar equals to this. So 1 Japanese yen and Indian rupees is what? And 1 Indian rupees to Japanese yen is this. So like अभी मैंने bunch of screenshots लिए हैं. Let's map the relation of these, right? So if you look at it, right, let's start with this. 1 United States dollar is equal to 90.71 Indian rupees. So when you basically do this, तुम्हारा 19.71 rupees आ रहा है, right? And 1 INR is equal to what? कितने Japanese yen होगा? 1.69. So now how much is 1 Japanese yen in US dollar, right? Wait, let's convert 1 Japanese yen into US dollar.
$1, that would be 1 by 153.22, or rather, if I have to show you guys, Japanese yen. Yeah, 1 Japanese yen is equal to 0.0065 US dollars, right? Okay, now assume करते हैं we had $100 with us. Okay, हमारे पास $100 थे. We converted into INR. Now we have 9,071 rupees. Okay, now we convert it into Japanese yen. We will have 9,071 into 1.69. That would be 15,329.99 yen. Now, if we were to convert these many Japanese yen into US dollars, right? That would be, guess what? That would be 169 US dollars. Are you seeing what we are doing right now? Matlab, I don't know if it's very much visible to you. You have taken $100, right? तुमने $100 लिए, तुम convert करते रहे, and then you finally reach to $169. $69 का profit. Insane amount of money to be made, right? And that is what foreign exchange market makers do. They, figure out the relations, they see the real time price. Obviously इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं included. It's not, you'll not get $69 profits out of nowhere. You'll probably have, the spread, the fees, and the volatility, and so on and so forth. Market making is not easy. That's why they pay you, 2 crores plus base. So, yeah, this is just a minute example of what graphs are really used for. This is just very market level application, but obviously दुनिया में बहुत सारी चीज़ें करने. You could have your computer networks. So like you can see, let's say you have a router A and B and C. Let's say you're doing maintenance operations, right? And you want to figure out अगर ये B ख़त्म हो गया, can I still get everyone to work on other, if B goes down, is other things still running? Well, obviously नहीं. If you really look at it, क्योंकि A के पास कोई connection नहीं है, B goes down. Now here's the thing that's gonna happen. A will be disconnected from CDE, right? So you might wanna have a network design where you add this as well. So just in case one thing goes down, other things are still connected, right? So that is again, like you're basically taking care of fault tolerance. The critical infrastructures, you basically use these methods. So that is what it is, right? Now, coming to what this actually is, like if you have realized it or not, I don't know. ये है node, okay, and this is the edge in a graph. So node represents an entity, right? The edge represents a relation, right?
Yeah, like this is the very basic things of graphs as such. Now, if we have to go further, let's say you have to, there are like, abhi we'll have to also see like multiple types of graphs, right? Now, obviously, what we saw above was actually a bidirectional graph, right? Uh, so there are multiple types of graphs over here. Like there is A, B, C. Here, there's no direction to it. So this is, I mean, in one sense, bidirectional. And there's also, like directed graphs. Uh, so these are your undirected graphs, and these could be your, directed graphs. So now, where do we use directed graphs? The use cases, there would be package management. Dependency resolution is what the entire thing is about. Jesus Christ. So now there are use cases like package management, right? And that actually uses dependency resolution. Um, Undirected graphs, well, they have a lot of use cases, but I don't really want to get into that because we're interesting here. Now, coming into the very important things. So now there's, of course, there are multiple types of um, graphs. We'll just keep going, and let's start with how to represent a graph, right? How do you represent a graph? Okay, मुझे पता चल गया ग्राफ ये करता है वो करता है, बट मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँ, राइट? So, to be honest, um, there are two ways. So there are two ways to represent graphs, right? You have adjacency matrix, all right, and then there is also um, adjacency map, right? तो मैट्रिक्स और मैप ये क्या है, क्यों है? This is something that I will show you while doing a question, because that will make more sense that time, but just know कि मैप मैट्रिक्स में exactly होता क्या है. So oops, it's like assume this is your matrix, okay, and मान लो तुम्हारा ए बी है और मान लेते चलो सी भी होगा, right? So you put A, B, and C here, A, B, and C here, right?
Is A connected to A, मतलब self loop है क्या? Well, it shouldn't be, so I'll put 0. Is A to B connected? Yes. Is A to C connected? Yes. Is B connected to A? Yeah. Is B connected to B? No. Is B connected to C? Yes. C connected to A? Yep. C connected to B? Yep. C connected to C? Nope. So this is your adjacency matrix. Now coming to adjacency map, वही सेम चीज़, ठीक है, यही सेम ग्राफ लेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट adjacency map is, right? So let's take a map. पता है मैप वही होगा. अब तुमने बोला कि okay, let's take A. Now A is connected to what? B and C. Okay, that's one thing, right? So you usually store it in array, right? So B is connected to what? A and C, right? C is connected to what? A and B. There you go. ये हो गया adjacency map and this is adjacency matrix. Now let's start with, मतलब ओके हमने अब मैप वैप कर लिया, बट हम अब करेंगे क्या? कुछ तो करेंगे ना, मतलब इसका फ़ायदा क्या हो? सो इफ़ you'd have studied trees, you'd have realized there's something called traversals. तो आप लोग के traversals होता है, right? Now in traversals you have basically the two major type. One is PFS, one is DFS, ठीक है. Now there are multiple use cases to each of them, and you will probably realize that key algorithms are based on BFS, DFS according to the nature of the problem itself, right? Um, so you have to basically burn this in your mind. There are there are the codes that are required to be inside your head completely, and you should not even think while coding this out. So starting with BFS, right? So like करते हैं BFS करते हैं. So like breadth first search. So this is nothing but the breadth first search, right? So इसका यूज केस ये है कि शॉर्टेस्ट पाथ है. Just remember this thing. Shortest path matlab BFS, end of the story. You don't even have to think twice, right? So your use cases could end up with you know minimum moves or steps, or मतलब basically जो भी minimum आता है ये सब आता है, or like the connections degrees. ठीक है, ये हो गया. अब तुम्हारे BFS में it's a pretty interesting thing, right? So how do you make the BFS work? That's a very important question to ask yourself again. ठीक है भाई, मैं A ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने B ले लिया, फिर मैंने C ले लिया, फिर मैंने D ले लिया, एंड देन E ले लिया. okay, let's assume अभी अच्छा खासा ये बना दिया नोड्स. ये तुम्हारे एजेस, ये तुम्हारा मान लो x, ये तुम्हारा मान लो ग्राफ हो गया, ठीक है. Okay, let's make things more interesting. Let's keep it this way. Very interesting graph, right? Let's start with the BFS part. अब तुम्हें मतलब BFS क्या करोगे? Let's just have a
very simple dry run. So I'm just gonna paste the code over here right now. There you go. This is what it is. बस इतना ही है. I mean इतना ही नहीं है, but बहुत ज़्यादा ये भी नॉनसेंस. मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ बस इतना ही होगा. Yeah. Okay, so I think this is pretty much visible. I hope. Yeah, I'll probably make it more bigger so that you guys can see more clearly. Okay, right. So if you really look at it, you have to start with the very important thing. So तुम्हारे होते हैं ना, Q होते हैं. So the deck over here is nothing but the Q. Now let's say you have a Q. Okay, ये तुम्हारा Q हुआ. Q है मुझे नहीं पता, मैं अभी बताऊँगा, रुक जा. फिर तुम्हारे नोड हो गया, ठीक है. Now you have pop left and all of this thing. Now in every question, मतलब हर ग्राफ क्वेश्चन में ना एक assumption मान के ये चलो. Always assume if starting point is not given. It will either be 0 or A, depending on, मतलब letter वाले आते हैं, number वाले आते हैं. Usually it's mostly number. I've barely seen any letter based graph, and it's for a very good reason. That's stupidity to begin with. So okay, you've done this. So अभी तुम्हें पता चल रहा है ये है start of 0. So you start with the entire part of 0. ठीक है. अभी हम इसको करते हैं ड्राई रन. So let's say we put in the Q of A, right? What's gonna happen after that? जब तक Q है हम इसको चलाते रहेंगे लूप पर, ठीक है. ओके, फिर अभी Q हुआ, पॉप लेफ्ट आया A. So your node is now A, ठीक है. Now you see this thing over here for neighbor and graph.get node, right? What this essentially is the implementation of using adjacency map. How? I'll show you. So let's first make an adjacency map over here, ठीक है. हमने बनाया adjacency map. Okay, A कौन सा है? B and C, ठीक है. अभी और आएंगे. Let's just start with this. So now you have your A, okay, for neighbor in graph.get, ठीक है. ग्राफ हमारा ये हुआ, नोड आया A का, ठीक है. ओके, अब so now essentially what we have is this is converted into B and C. So now your neighbor is gonna iterate with this. So now your neighbor is B. Is B not in dist? Well, it's not. So well, you're just gonna put the neighbor into this map, right? And let's just say you put it as अभी start 0 है, but you put your A as distance of node, that would be distance of node would be A over here actually, if you think about it, huh? तुम्हारा A है, तुमने B किया, so we'll be starting with A and then you do B. Now your B would be, distance of B would be distance of A plus 1. तो distance of A तुम्हारा भाई 0 है, 0 plus 1
बहुत बढ़िया। और फिर तुमने ये क्या किया, बी को उधर अपेंड कर दिया, और बाय द वे कट चुका है, ठीक है। सी करते हैं, सी किया, लाइक तो 0 प्लस 1 वापस, तो तुम्हारा सी हो गया। Now essentially if you look at it, तुमने क्या किया इधर, the shortest distance between from A of all the points is, समझ रहे हो, shortest distance from A to whatever point it's connected to, right, shortest distance, ये है तुम्हारा 1 और ये है तुम्हारा 1। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। फिर तुम वापस लूप पे आओगे, फिर तुमने पॉप किया बी को, एंड देन यू नो इट बिकम्स बी, एंड देन बी का एजेंसी मैप लिख लेते हैं हम। ओके, बी का एजेंसी मैप क्या होगा, ए एंड सी। ओके, नाउ do you see this condition, if neighbor not in distance, right? अब मान लो तुमने ए एंड सी इधर आ गया, राइट, अब तुम ए कर रहे हो वापस इधर। रिमेंबर, अगर ये नहीं होता ना, ये कंडीशन नहीं होती, दिस वुड हैव बिकम अ पेन इन योर आंस, एंड आई विल सी व्हाई। लेट्स अज्यूम ये इधर ए है, और हम अगर ये कंडीशन नहीं होती, फॉर एग्जांपल, सो इट बिकम डिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी प्लस 1। सो डिस्टेंस ऑफ अगर ए होता तो मेरा हो जाता डिस्टेंस ऑफ बी, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस 1, दैट वुड बी 2। भाई कहाँ से तुम्हें लग रहा है बी और ए का 2 हो जाएगा, मतलब ये तो पागलपंती हुई ना। लाइक डू यू रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग? So that's the reason why we have condition like this. This is the most useful thing that you can have. This will prevent a lot of bugs in your life. So yeah, make sure you keep this. This is the most important condition, right? चलो A है मेरे पास, वो नहीं करेगा, मेरे पास C भी है, वो टच नहीं करने वाला, so all done. Now we come to C. देखोगे C है, अब C में देखते हैं क्या है। C is connected to A B D E, भाई साहब, फिर भी हमने देखा यार, चलो ठीक है, A B D E कर लिया, A और B तो है, D आ गया। D में देखेंगे क्या होगा, तुम्हारे D में ये क्या करेगा, कर देगा 1 ऑलरेडी है, इसको कर देंगे 1 प्लस 1 2, ठीक है, और E को कर देंगे 1 प्लस 1 2, राइट, क्योंकि फिर लुक एट डिस्टेंस ऑफ व्हाटएवर नोड इज ऑलरेडी 1 है, सो लाइक 1 प्लस 1 2 हो गया, हाँ, एंड बाय द वे हमने D और E को डाल दिया, which will basically just do the same thing and you will get the answer is this, right? So तुम्हारा distance basically अब क्या हो गया इसमें, ये हो गया distance of 2 and 2, right? अब मान लो हाँ तुम्हारा D to E को कोई मतलब फक्स नहीं देगा, क्योंकि your entire goal is कि to find the distance from node A to all the nodes, the shortest distance. Let me keep reminding you, shortest distance from some point to all the points. This is where BFS is useful. हो सकता है और जगह भी हो यूजफुल, ऐसा नहीं है कि this is the only thing by the way, obviously, right? Oh, also by the way, this is something very important, ये अनवेटेड ग्राफ है, ठीक है, वो भी ध्यान रख लेना। वेटेड ग्राफ में अगर तुम ये लॉजिक लगाओगे बहुत पछताओगे। So weighted, weighted graphs is a different logic altogether. Yeah, that's about it. In fact, तुम्हें एक्चुअली ये याद रखना है, BFS gives a minimum edge, minimum edges, ठीक है, वो मिनिमम वेट नहीं देता है, it doesn't give minimum weight, minimum
distance, it gives minimum edges. If that's the mentality that you have, it will be easier for you as well. ठीक है, अगर आज के दिन अगर मैं इस ग्राफ का वेट रख दूँ ना, बी एफ एस पूरा ये वाला जो कोड है पूरा मतलब अलग ही होगा. बी एफ एस ब्रेक्स when you start assigning cost to the distance, like the between the relations. So तुम्हारे बी एफ एस ये हो गया. ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे डी एफ एस पे. यार डेप्थ सर्च, ओके एज अ नेम सजेस्ट, मैं ट्रैवल्स करके दिखा देता हूँ. और बी मच फास्ट जॉइन देन विल डू अ ट्रायल. डेप्थ सर्च में क्या होगा, ये करेगा इधर से इधर, इधर से इधर, एंड बूम. लूप में तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट हाँ वी शुड. सो अगर तुम्हें पता भी चल गया ना एक्चुअली, तो अगर तुम्हें दिमाग लगाया तो तुम्हें पता चलेगा ये साइक्लिक में हेल्प कर सकता है. एंड cyclic is also one of the most widely asked topic, though that is something I'll cover. You're right, where I mean cyclic मतलब तुम्हारा वो भी हो गया एक्चुअल में टॉपोलॉजिकल ऑर्डरिंग उसमें ही आ जाता है. Right. And then you have your flood fill algorithms जो होते हैं तुम्हारे. These are the type of questions that will be asked. So like तुम्हारा MS Paint होता है ना, like you have this bucket, fill bucket करके एक होता था, where you just you'll just click on one pixel and it'll go and cover all the 1,000 pixels whatever that were empty, right? So that is the use of DFS. That's one of the most interesting thing. फिर तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आ जाएगा ये इन क्वींस मेथड, which is very very widely asked in exams, Indian exams for sure. फिर तुम्हारे मान लो तुम्हारे जैसे मान लो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे वेर पावर ग्रिड्स हो गया या राउटिंग का हो गया. दिस इज प्रॉब्ली वेयर DFS विल बी आस्क्ड. And then yeah, that's about it. तो वही है. So if I have to summarize, अच्छा मैं DFS का कोड भी दे ही देता हूँ. So we'll have a dry run of DFS code as well. DFS code is super easy. तो यार तुम्हें नींद में भी आ जाएगा, आ जाना तो चाहिए, नहीं आए तो वही प्रॉब्लम है. ओके सो तुम्हें समझना है DFS का कोड. ठीक है, to begin with, right, तो लेट्स सी. ये तुम्हारा मान लो ग्राफ हो गया. ठीक है, अगर if you are listening from like till now, so I'm just gonna ask you a simple question. Put it in comments, right? ये क्या है? What is this thing called? Like which representation is this? Okay, anyways, moving on to dry run. Just comment it in the YouTube video, or at least know what you're answering, or at least see the comments. That would be very important. अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा, वापस जाओ, वापस देखो, दूसरे यूट्यूबर से देखना, उसको देखो, बट मेक श्योर यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? सो तुम्हारा विजिटेड हो गया सेट. ठीक है, आई टेल यू वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी. ठीक है, विजिटेड सेट होना चाहिए, और बेसिकली वट एवर इज रिक्वायर्ड. बट हाँ, फिर लेट्स सी.
नाउ हम इसको बैक ट्रैक करते हैं, ठीक है. सो विल स्टार्ट विद दिस रिकर्शन ग्राफ. डीएफएस हमारा ग्राफ था, ज़ीरो था, विजिटेड था और ऑर्डर भी है, ठीक है. what we have to return is the order of the way we are traversing, ठीक है. तो हमने चालू किया, ठीक है. हम गए इधर, हमें मिला अभी ग्राफ मिल गया इधर, हमारा नोड ज़ीरो हो गया, विजिटेड एम्प्टी है, ऑर्डर भी एम्प्टी है, ठीक है. और हमारा ग्राफ है, ठीक है. हमने विजिटेड और ऐड किया नोड को, ठीक है. हमारा नोड क्या था ये, तो हमने अभी विजिटेड को कर दिया अभी के लिए, राइट. इसको कर दिया हमने नोड में ऐड ज़ीरो, ठीक है. नाउ ऑर्डर डॉट अपेंड कर दिया, तो हमारा जो ऑर्डर का है वो भी नोड में अपेंड हो गया. नाउ फॉर नेबर इन ग्राफ डॉट गेट नोड, मतलब तुम्हारा जो नोड है ग्राफ आया, ग्राफ में तुम्हें 0 1 2 मिल गया, सो दैट विल बेसिकली भी 1 2 में तुम अब आइटरेट करोगे. अगर नेबर नॉट इन विजिटेड, ठीक है, अगर 1 नहीं है विजिटेड में, तो तुम डीएफएस कर लो वापस. सो एसेंशियली नाउ यू हैव डीएफएस ऑफ G1 of visit is 0 and order of 0, ठीक है. now let's assume you go back. अब दिस टाइम तुम्हें इधर ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया, एंड इसके वजह तुम्हारा 1 हो गया, ठीक है. ना विजिट और ऐड किया तुमने नोड 1, ऑर्डर और अपेंड किया तुमने 1, ठीक है. एंड दिस टाइम डीएफएस ऑफ 1 गिव्स यू 3, ठीक है. अब तुमने देखा यार नेबर विजिटेड है क्या, 3 विजिटेड है नहीं है यार, तो अब तुम क्या करोगे, डीएफएस कर लिया तुमने वापस, ओके. सो डीएफएस वापस, एंड देन यू डू ग्राफ ऑफ 3 एंड यू सी व्हाट इज बीन ऑलरेडी डन, 0 and 1, ठीक है. तुम्हारे पास अब 0 and 1 है, और उधर भी ऑर्डर भी 0 and 1 है, राइट. देन अगेन यू स्टार्ट विथ योर 3 this time and you make it 1 and then you make it 1, ठीक है. फिर वही यार, तुमने वापस किया, तुमने ऐड किया नोड को, इधर भी ऐड किया 3 and then you start saying what is 3 है ऑलरेडी 4 है, ओके. 4 इधर आ गया, 4 विजिटेड है नहीं है भाई, तो तुम गए, तुम ऐड कर देगा यार डीएफएस जी है 4 है 0 1 3 एंड देन 0 1 3, ओके. फिर तुम वापस इधर आ गए. नाउ राइट, अब तुम देख रहे हो यार जी आ गया, नोड हमारा अभी क्या था 4, ओके. you have 4 and then you have your 0 1 3 and then you have your 0 1 3, ठीक है. नाउ हम 4 पे आए, हमने देखा यार ठीक है नहीं है, 4 इधर ऐड कर दिया. अब देखते हैं 4 में क्या आ रहा है, 4 में कुछ नहीं है, 4 में कुछ नहीं है, स्किप हो जाएगा, दैट्स ऑल. देन यू गो बैक टू 3. अब तुम देख रहे हो 3 में कुछ और है नहीं है, ओके. यू गो बैक टू 1 में और कुछ और था नहीं है, यू गो बैक टू 0 में 2 है, ठीक है. तो तुम्हारे 2 आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. नाउ इज 2 इन दिस थिंग नहीं है, so you essentially end up with DFS G2 and then you end up with visited of what was it, 0 1 3 4. So you have a 0 1 3 4 other, alright, and then other 0 1 3 4, right. You go over here and then you put 4 and then you put 4. This may be the node becomes 2, like okay 0 1 3 4 2 1 3 4 2, कुछ नहीं बचा 2 में 3 ऑलरेडी था, okay. Now see this thing 2 and 3 है, ठीक है. तुमने 3 किया, if neighbor not in visited, is it visited? Yes, it is visited. तो तुम नहीं करोगे,
If this wasn't there, right? Let's assume this wasn't there. You'll go back again. You start the DFS 3. ठीक है? Let's assume वो नहीं था तो क्या होता? ठीक है? DFS G3. Now you have 0 1 3 4 2, and then again 0 1 3 4 2. Okay, right? And अब तुम गए, you're like, okay यार 3 हो गए. Now there's 3, there's 2, and so on and so forth, right? Now see this funny thing, ठीक है? अब तुम्हारे वापस 3 इधर आ गया और वापस 3 इधर आ गया. This was supposedly a set. By the way ये set है, so this will fail. ये fail हो जाएगा, ठीक है? So that's also one reason why you should use set. Okay, now मान लेते हैं अभी सेट नहीं था, हम चलते गए आगे गए, 3 आया 4 आया, ठीक है? नाउ अगर 4 है इधर, राइट, स्टार्ट विथ 4, कुछ नहीं है अभी तो, चलो ठीक है, बंद हो गया. बट मान लो अगर 4 वॉज कनेक्टेड टू 3, राइट, इफ इट वॉज एक्चुअली साइक्लिक, ख़त्म, like seriously ख़त्म. You will end up in a loop, you'll end up in a endless loop. तो तुम DFS G4 करते रहोगे, देन वही सेम चीज़ रिपीट करते रहोगे, DFS G3 G4, और एक दिन ऐसा आएगा जाके तुम्हारा फंक्शन स्टैक फिल हो जाएगा, एंड देन योर कंप्यूटर विल क्रैश. इट्स द एंड ऑफ इट, right? That's the importance of this one little statement. ये नहीं होता ना, तुम्हारा कंप्यूटर क्रैश हो चुका होता अभी तक. This is the most important thing in DFS with visited. It's very important to know that cycle detection हो रहा है. अगर तुम्हें समझ नहीं आया अभी ये क्या हुआ, let me put it in a graph, right? 0 1 2, ठीक है? 1 is connected to 3, 2 is connected to 3, 3 is connected to 4, 4 is connected to 3. Do you see what's happening? तुम लोग देख पा रहे हो? साइकिल हो रहा है, गंदा साइकिल हो रहा है, ये ऐसे बार बार अटक रहा है. This stops the cycle from being repeated. And hence तुम्हें ये भी पता चलेगा, if you were smart enough you would have realized कि मैं साइकिल कैसे फाइंड करूँ, राइट? तो तुम क्या करोगे? if you hit the same thing again, right, you can say this code contains cycle. That's simple, right? We'll further obviously when we move forward we'll obviously discuss further on this part, but I hope this makes sense. Now हमने DFS कर लिया, cycle detection, well, is a very big, it's not a big topic, it's rather very important because there are multiple questions on this, so I'll be putting that down in the next video. So let me know if you need something else. So see you guys, ciao, shabaka.